अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ेबन्स कुकिंग चैनल। उम्मीद कर रही हूँ मेरे भैन भरा ठीक हो सन जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हाँ। अज मैं अपने वीडियो विच लेके आई हाँ एक खास डिश। इसका नाम है चना पापड़ी चाट। चना पापड़ी चाट एक खट्टी मिट्टी चाट है जिहड़ी हर कुसै की पसंद अच्छनी है, बनाने च भी ते और खाने च भी। अज मैं तुसां की दसां चना पापड़ी चाट किस तरह बनाना है। 2 cups of yogurt, now I'm going to mix the yogurt. This will take me a few minutes. I'm adding in 2 tablespoons of sugar. I'm going to mix the sugar inside the yogurt until it dissolves. थोड़ी देरी पहले मैं इमली दी चटनी बनाई सी। बोल विच मैं चने बांधनी आ। हुण मैं उबले हुए आलू भी बांध लगी हाँ। 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 teaspoon chaat masala, 1/2 cup imli chutney. Now I'm going to prepare for the mint chutney. I'm adding in a couple of mint, handful of coriander, 2 garlics, 1/2 teaspoon of salt, and a small amount of water, and I'm going to mix this together. This will only take me a few minutes to mix. Now the chutney is ready. Now I'm going back to my mixture which I prepared earlier. I'm putting in 2 tablespoons of mint chutney, adding in chopped onions. ਹੁਣ टमाटर भी बांध लगी हाँ। I'm also adding in green chillies, finely cut, handful of coriander, one tablespoon of lemon juice. I'm adding in yogurt which I prepared earlier, 6 to 7 tablespoons of yogurt. इत्थे हुण थोड़ी जी होर इमली दी चटनी पाई है मिक्सचर ने उपर, और मैं सारियां इंग्रेडिएंट्स सही करता मिक्स करसां।
ਮਿਕਸਚਰ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਹੈ। Now I have completed making the mixture and I'm pouring the mixture inside a separate tray. Once this is completed, then I will do the garnishing at the end. Now it's the garnish time. I'm adding in all the onions which I cut earlier. टमाटर रुंबान लगेगा। इमली नी चटनी बान लगी है मिक्सचर पर। Now I'm adding the mint sauce. In goes the yogurt. चने भी बाण लगी यहाँ पर फाइनल टचेस वास्ते। आलू भी थोड़े जे रखे से मैं फाइनल गार्निशिंग लुक वास्ते नाइस लगसन। सो तुसां ये भी करी सकने हो जिल्लै फिनिश करने पर सो बनाने च पापड़ी चाट। पापड़ियाँ चाट मैं तुसें दस्सन लगी हाँ फॉर एक्स्ट्रा क्रंच। I'm going to spread this out evenly all over the mixture. चना पापड़ी चाट बनाने विच मेरे किचन च इतनी खूबसूरत खुशबू सी, सारे मसालियां नी, सारे मिक्सचर नी। मैं उम्मीद करनी हाँ कि अज ना वीडियो मेरे भैणा भरावां की पसंद आया उसी। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरे भैणा भरा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करे है। शुक्रिया। चना पापड़ी चाट वन ऑफ माई फेवरेट डिश है। बनाने च भी ईजी और खाने च भी मज़ेदार है। इत्थे मैं एक्स्ट्रा पापड़ियाँ रखन लगी हाँ। चना पापड़ी चाट तैयार हो गई है, मुकम्मल हो गई है बनाने च। इतनी सोहनी मज़ेदार पापड़ी चाट बनती है। ये बहुत ही आसान तरीके नाल ये बनी है चना पापड़ी चाट। ये हर ओकेजन वास्ते है। अगर तुसां ने घर मेहमान आए रहन जां तुसां ने घर कोई बंदे दावत वास्ते आए रहन जां रमज़ान दा महीना तां भी तुसां बनाई सकने हो ये चना पापड़ी चाट। चना पापड़ी चाट हेल्थी भी है, बनाने च आसान, खाने च मज़ेदार। चना पापड़ी चाट। Please don't forget to like and share and subscribe to my channel. Allah Hafiz, Khuda Hafiz, bye.